डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है डिजिटल हेल्थ केयर। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान हेल्थ केयर स्टार्टअप्स का भी रहा है। जी हाँ, इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स के साथ पेशेंट्स की लाइफ ईजी कर रहे हैं और कई ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स एक ब्रिज की तरह है जो लोगों के डिमांड्स और नीड्स को उनके सप्लाई से जोड़ रहा होता है, मिला रहा होता है। लोगों का भी भरोसा इन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स की एप्लीकेशंस और सर्विसेज पर काफ़ी बढ़ रहा है। पहले के तुलना में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका यूजेज इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी देखा जा रहा है। मेडी सर्कल इन्हीं इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप पे एक सीरीज कर रहा है जिसमें हम हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनके सीएक्सओ से बातें करके ये जानना चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट्स और उनके ऑफरिंग्स किस तरह से इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हेल्थ केयर के 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन्हें भी वो कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं हेल्थ केयर स्टार्टअप से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्थ केयर को और डिजिटलाइज और सक्षम करने में इंडिया की काफ़ी सहायता कर रहे हैं। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हेल्थ केयर स्टार्टअप्स बहुत सारे बेटर पेशेंट एक्सपीरियंसेस के लिए रेवोल्यूशनरी वे में काम कर रहे होते हैं। ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्होंने खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे सर्विसेज ऐप के रूप में लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ये सीनियर सिटीजन्स कर पाए तो उनका जीवन काफ़ी हद तक आसान हो पाता है। इस पैंडमिक में बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। कई सारी चीज़ें जो पहले फेस टू फेस या पर्सनल मीटिंग्स या फिजिकली हुआ करती थी, अब वो वर्चुअली हो पा रही हैं। इसी वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इतने सारे इनोवेटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। हमने शायद ही आज से पहले इतने सारे हेल्थ केयर एप्स देखे होंगे, जो कि अपने में एक बहुत ही अच्छी बात है, एक नई शुरुआत है। नए हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कॉमन चैलेंजेस जैसे अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी को खत्म करने में और उसे काफी हद तक मैनेज करने में भी सक्षम होता है। मेडी सर्कल में हम हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज के माध्यम से लोगों में हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स और नए स्टार्टअप रेवोल्यूशंस के बारे में भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बात करने वाले हैं अतुल जगदीश से। अतुल जगदीश ऑलसर्व के वीपी हैं, को फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अतुल जगदीश में बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस ऑपरेशंस भी देखते हैं। ऑलसर्व का जो हेडक्वार्टर्स है वो चेन्नई में है और यह ऑलसे ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है। ऑलसर्व सीनियर वेलफेयर में इन्वेस्ट करने वाली एक पैशनेट टीम है। ऑलसर्व का एम है सीनियर सिटीजन्स की मदद करना, ताकि वह भी अपने तरीके की एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके और उन्हें कहीं और जाना ना पड़े या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। Armed with a PM from the acclaimed ISP, Hyderabad, and having previously founded a health and fitness company, Mr. Atul has special interest in building businesses for the contemporary world. Hello, Atul. How are you? Hi. Thank you for the warm intro. So welcome to MediCircle, Atul. And the most important point जो मैंने अभी जस्ट जिक्र किया, मैं उसे वापस एम्फसाइज करना चाहूँगी। टेक्नोलॉजी का जो मकसद है वो कई हद तक लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, जिसमें एक कड़ी सीनियर सिटीजन्स को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। कई बार हमारे जो सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली कपल होते हैं वो इन एप्स के बारे में बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पूछते हुए नजर आते हैं कि ये कैसे होता है, व्हाट्सएप कैसे चलता है, इसे कैसे यूज करते हैं। ये जो इनक्विजिटिवनेस है और ओपननेस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी है, दिस इज रियली अप्रिशिएटिंग। ये ऐप और ये जो एप्लीकेशंस है वो कई हद तक इनकी लाइफ को भी आसान कर सकते हैं। इमरजेंसीज में अगर उन्हें अपने परिजनों को कांटेक्ट करना है, अपने लव्ड वंस को अप्रोच करना है या किसी भी समस्या का अगर समाधान निकालना है अपने दम पर, अपने ऊपर, तो वो इस तरह के एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। तो अतुल, आप बताएं कि आपने जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपका ऑफरिंग है, वो किस तरह से एल्डरली को लोगों को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
Also is a senior assisted living services platform. So this platform was started, so like essentially for people who are in their homes in the cities, but they don't want to move into any kind of a retirement community. So like in some there are more than 40 million people elders over the age of 62 in urban cities, but not all of them want to move into a retirement community. And the reasons may be plenty. They may have friends in the city. They may have, they may have like a routine, like in the place where they live, and they may have lived there for a long time as well. But for those people where they don't need continuous care, but they need some kind of support to be able to take them through the day, through the month. That is a space in which we are able to help them. So all the services which are required for an individual or a household can be done through AllServe. Right from buying fruits, vegetables, and the groceries, to any kind of healthcare service, to any kind of services, like if they need, like if people need a plumber or a carpenter, or if people need any kind of a setup of a CCTV camera or any kind of equipments in their house, or even food, also is able to help them. Every family who's a subscriber in also will be dedicated with one manager. This will be like a bank relationship manager, but he or she will be part of their extended family and will know them, will speak to them once or twice a week to understand what their requirements are and how things are going on with them. And they'll be able to help them with all the services at their own houses. Like it may be a sample blood test, or it may be a doctor. They just want to speak to a doctor, or they might just need a companion for a day or two just to hang around with them, or take them to like a shop nearby, or for an event nearby, just to hold their hands. Those are the things what also helps them. That's great to know. So in a way, like there are a lot of elderly people who do not need a continuous care or healthcare care, but sometimes they need assistance. I think in which AllServe is actually helping them out. So tell us how this application can be downloaded and how senior citizens can use this app. Of course, yes. So like AllServe app is available both on Play Store and on the like iPhone store as well. So we have one phone number for all our customers, and they will always reach a human being whenever they call AllServe, and they will reach their own RM whenever they call. So so people will be able to download the app and request for a service on the app also, but they can also use the phone if they are not as comfortable with the app. Call the RM and say that this is what this is what I need. I need lunch tomorrow, breakfast tomorrow. They'll be able to say their customizations over phone in a better way, and all the calls and all the requests will be there on the app. There will be like a trail of their money, which is which they have spent. All payments are very transparent. All the work which is done only by experts in that industry. So we have verified and we had made sure that there are over 150 people, service providers in AllServe app, who will who will ensure that there is no mishap in the service which is going on. So that's the advantage of going through AllServe. The costs are also low because we are an aggregator, because we'll be able to negotiate for better costs for the elders who are who are part of AllServe. That's a great idea to have, because nowadays we see that the market is full with a lot of apps which are actually helpful. Most of them are actually helpful for the elderly, but so actually bringing them together on one platform, and so that the elderly can actually have somebody to assist them, choose the right application, and also get good things at good discounted prices. Because as you said that you are being an aggregator, you are negotiating the prices also. So that is really great to know. Atul, tell us something about your entrepreneurial journey. How has that been? When did you found it also? And how has the experience been till it?
Sure, great. So like also was like founded in like end of 2019. We went commercial in Jan 2020, right before the pandemic, and the journey has been nothing more than full of surprises because like in March to 2020 we had a lockdown and we had to reinvent our whole model in less than 3 months of trying to say that this is how it will go for the next year and a half. But we made sure that we were available all through the pandemic for all the elders who are part of AllServe. And like we are essentially like a subscription model, but through the pandemic we said we need to be able to help people more than anything else. So we gave our subscription for free for all the elders in the city of Chennai, and we said whatever you want, whenever you want, we will be available for you. We had migrated to a work from home kind of a culture, and with the same phone number, with the same kind of a setup, with the same app, everything, we were able to help people through the period of COVID, through the period of their of their isolation, people who are who are trying to be at home and trying to be safe. We made sure they did not go out even to buy fruits or vegetables. On one phone call, like on the app, and we made sure that all fruits and vegetables, everything was available for elders. And we would make sure that on the time they had asked and on the customization, we would be able to deliver that to them. But moreover, so people who were not affected by like COVID, they still required a lot. They still required a lot of regular checkups. From like doctors, they still had to speak to a doctor. They still had to visit a physiotherapist. They still had to have some kind of companionship with them while they are alone. They're not able to meet people. They're not allowed to go out. So we were very helpful to people in all these things. So, on food and on healthcare, these are the two more, these are the two most important things that people would need, and we were able to help them with that. Okay. Yeah. So, Atul, as this is a lot elder friendly kind of an application where they can actually get a lot of things, which is just not related exactly to healthcare, but sometimes a companion and even a grocery, which can be just ordered on the app. So that is a good thing. But just tell me one thing, that why you started with this, because again, lot of people have created a lot of applications on healthcare. So how did the idea start you? So the idea is to not have only one service. Our idea is to have a wholesome approach to what an elderly family will require. So we wanted to make sure whatever is required for an individual or a household can be got through also. Some of the people, like especially like elders, they are not able to use multiple apps and manage multiple apps and payments, for what they need. But in our system, they are able to have a single platform, single payment, and they will also have like a relationship manager who will assist and guide them to what is required, and will be of assistance if there is a problem as well. Like if there's a plumber who's going to come and that work is not done properly, they can call us and they can tell us. We will always be available to ensure that there is an alternate person to come and help them with like the query that they have. Definitely. So thank you so much, Atul Jagdish, for joining us today at MediCircle. जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एल्डरली लोग हैं जो इतने सारे ऐप्स में कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है. So I think AllServe solves a lot of purpose, as the name says, that it is serving all purposes. So I think that might have been the thought while you named this company, Atul. Yes. So over to all my audiences, आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे किसी भी एल्डरली को जिनको इस तरह की एप्लीकेशन की जरूरत है, काइंडली ये इंफॉर्मेशन उनसे शेयर करें, so that we are able to make them self independent. That is the key, because वो भी उतने ही डिग्निफाइड वे में रहें, उन्हें भी हर छोटी चीजों पे दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़े. ऑल्सो कोविड हैज मेड लॉट ऑफ पीपल वल्नरेबल. बहुत सारे लोग सेल्फ आइसोलेशन में थे, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस था,
क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी. बट फॉर सीनियर सिटीजन्स ये स्ट्रेस और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद से करना पड़ता है, वो जो खासकर अलोन रह रहे होते हैं. उस समय इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च होना और उनके लिए हेल्प करना, एज अतुल सेड दैट विद अ गुड जेस्चर इट वाज फ्री फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर इन चेन्नई. सो आई hope that these kind of applications are there in the market who are there to help our senior citizens, and so that they can live life more easily and healthy. Thank you so much, Atul, for joining us today. It was a pleasure having you here. Thank you.